सॉरी नहीं हो रहा था, थैंक यू, मुझे लगा मैंने स्टार्ट किया है उस टाइम। चले हम आउटलाइन से रीडिस्कस कर लेते हैं। ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। सो आउटलाइन में यही है, वी आर गोना डिस्कस अबाउट टेंसेस, उनके यूजेस, हम लोग कौन सा टेंस कहाँ यूज करें, कौन सा एक्शन वर्ब्स, कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह, सारा स्ट्रक्चर वगैरह हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम यूज ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स में हमारे पास वही ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स आएंगे। ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। देन वी हैव एरर डिडक्शन। एरर डिडक्शन की कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं होती, it is based on your concepts of your tenses, your subject verb agreement, prepositions, articles, conjunctions. So ये उसी पे सब पे डिपेंड करता है ना, एरर आपका किसी भी उसमें आ सकता है। सो हम इसकी ये है टेक्निक की होगी कि मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी जो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप लोगों की एरर डिडक्शन वाली प्रैक्टिस होगी और आप लोगों को आएगा। Then we have subject verb agreement जिसके around 10 rules होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। Then we have use of articles and the, we are going to discuss about that. Then we have punctuations. Punctuations में हम लोग जो हमारी कुछ common punctuations है, for example comma, and we have period, semicolon, colon and exclamation sign. So we are going to discuss about this. ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की आपको टेक्निक्स बताएंगे, दो टेक्निक्स होगी, स्किमिंग। सो वी आर गोना डू दैट। फिर उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी में आपके पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बोथ, वैसे तो आप लोगों को बुक दी गई है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब वोकैब है, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से फर्दर कुछ नोट्स शेयर करूंगी जो आप लोगों को खुद मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है। Synonyms और antonyms vocabulary is not something जो मैं आपको सिखाऊं, ये आपको खुद लर्न करनी पड़ेगी ना। यूजुअली vocabulary building की टेक्निक्स रीडिंग होती है, रीडिंग से आप लोगों की vocabulary बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन राइट एट द मोमेंट आप कितनी बुक्स पढ़ लेंगे ना। सो वी हैव पर्टिकुलर नोट्स जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी vocabulary के वर्ड्स हैं, जिसमें synonyms हैं, antonyms हैं। So I'm going to share that with you, so वो आप लोग फिर जाके खुद से मेमोराइज कीजिएगा। ठीक है। और जो भी डिफिकल्टी उसमें आप लोगों को आए, सो यू कैन आस्क। फर्दर इज दैट यूज ऑफ पेयर वर्ड्स। वही पेयर वर्ड्स में भी आपके पास यही होता है कि सेम मीनिंग वाले या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वर्ड्स होते हैं। पेयर वर्ड्स में आते हैं, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। Then we have coordinating and subordinating conjunctions and clauses, हम फिर वो डिस्कस करने वाले हैं। And then in the end we have prepositions. So ये कुछ ये आउटलाइन है जो हम लोग throughout the course कवर करेंगे। अब इसकी टेक्निक्स भी मैं आप लोगों को मैंने बता दी कि मैं आप कौन सी चीज आप लोग किस तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बेटा आई एम डन विद दिस आवाज, आई डोंट नो कि आवाज क्यों कट रही है, आज ही इशू हो गया ये आवाज का, और बहुत गलत हो गया। आई गेस सिग्नल प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस वजह से मेरी आवाज कट हो रही है। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू हैव अनदर कनेक्शन। आर्टिकल्स वैसे तो नहीं आएंगे, एरर डिडक्शन में मे भी आ जाए, मतलब एरर डिडक्शन में तो कुछ भी आ जाता है ना, तो इसलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू खलील, दिस साउंड्स गुड कि मेरी आवाज सही आ रही है। और एनीथिंग एल्स जो आपको पूछना हो? या एरर में आ जाते हैं ना, एरर डिडक्शन में आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, आर्टिकल्स आ जाते हैं, ये कंजक्शंस आ जाते हैं आपके पास टेंसेस में, और वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में आपके पास एरर डिडक्शन आता है।
एंड देन एरर डिटेक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आ जाता है, तो यही, और प्रीपोजिशन में भी सब्जेक्ट एरर डिटेक्शन आता है, तो इसलिए फिर हम ये कवर करेंगे। बाकी प्रैक्टिस आप लोग भी खुद कीजिएगा। मैं आपको टाइमली जो है वो नोट्स शेयर कर दूंगी, ताकि आप, अब देखें 7 डेट आ चुकी है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही मंथ है जिसमें हम लोगों ने ये कोर्स कवर करना है। सो आप लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा थोड़ी स्टडीज को, वरना कवर नहीं हो सकता। आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी। वैसे तो आप लोगों को बुक दी गई है ना, सिर्फ सरासत ने आपको बुक दी है, उसमें से आप लोग प्रिपरेशन करें। फर्दर ये जो स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे ये भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। देन अगर इन एक्स्ट्रा में कोई नोट्स प्रोवाइड करने की नीड हुई, सो आई विल प्रोवाइड यू। वैसे नीड होती नहीं है, बट फिर भी मे बी मैं आप लोगों को ये वोकैबुलरी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के कुछ नोट्स दे दूं, और एरर डिडक्शन के मे बी शेयर कर लूं। ले लें बुक। ये बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं। बेटा डिफिकल्ट टास्क कोई भी नहीं होती, डिफिकल्ट जब आप लोग आ जाएंगे ना आईपीए में फिर होगा। मतलब इस वक्त आप लोग, टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता जहां तक मेरा आइडिया है ना, मैंने भी टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैं भी डायरेक्ट टेस्ट आईपीए में आई थी, तो एज सच डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप लोगों के पास बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग है, सो यू आर गोना डू इट ना, आप लोग कर लेंगे। बट क्या अगर आपकी बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप टाइम नहीं दे रहे अपनी स्टडीज को, फिर शायद मुश्किल है आपके लिए, वरना आराम से हो जाता है टेस्ट। बाकी फिर जब आप आईपीए में आएंगे ना, फिर आपको डिफिकल्टीज का पता चलेगा जब आपको कोर्सेज क्लियर करने होते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कट ऑफ बता दे आईबीए का जो अभी डायरेक्ट टेस्ट में होता है। बेटा कट ऑफ का मुझे नहीं पता, कट ऑफ वाला सीन जो है ना वो देख चेक करना पड़ेगा, हर दफा पॉलिसी इन लोगों की चेंज होती है, तो आई एम नॉट श्योर कि इस दफा उन लोगों की कट ऑफ पॉलिसी क्या है। थैंक यू मैम। हाँ वका टेस्ट इजी होती है, इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती टेस्ट। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। मैंने 2 मंथ्स में प्रेप की थी, आई रिमेम्बर, हो गया था। रेगुलर प्रोग्राम डिफिकल्ट फिर यहाँ पे आपके ऊपर आ जाता है एजाज के हाउ यू आर गोना डील ना। अगर आप जो है ना वो शुरू से करते हैं, तो ये होता है कि अगर आप शुरू से आप लोग टाइम मैनेजमेंट वगैरह रखते हैं तो आसानी से हो जाता है, वरना फिर थोड़ा सा आपको इशू होता है। मतलब आपके पास मिड्स होते हैं, 2 मिड्स होते हैं, देन आपके पास सेशनल असाइनमेंट्स आते हैं, देन उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइनल, तो जिसमें आपको अच्छी तरह प्रेप करनी होती है। ओके आई गेस या स्कॉलरशिप होती है ना, वो इसलिए टेस्ट मुश्किल होती है, डायरेक्ट टेस्ट इतनी मुश्किल नहीं होती। स्कॉलरशिप वाली आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट डीएचपी और एनटीएचपी।
मेरा तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द असेसमेंट क्राइटेरिया। असेसमेंट में हम लोगों का कुछ चीज इस तरीके से होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोगों की जाएगी, मे बी इन द एंड वी हैव समेटिव असेसमेंट। जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, वी आर गोना हैव अ बिग टेस्ट। तो हमारे पास जो है वो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा, हम लोग एक टेस्ट लेंगे ताकि आप लोगों की उसमें असेसमेंट की जाए। फर्दर साथ के साथ आप लोगों के साथ कुछ लिंक्स शेयर की जाएंगी टाइम टू टाइम, जो आप लोगों ने जाकर सॉल्व करनी है ताकि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो इट्स 6:53। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? मैम 8 बजे, 8 8:15 पे। 7:15 ना। सो वी हैव हाफ और हमारे पास आधा घंटा है अभी। 7:30 बजे तक हम अपनी क्लास माइंड अप करते हैं, फिर हम लोग जो है ना वो आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें अगर कोर्स आउटलाइन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निक वगैरह में अगर आप कुछ चाहते हैं इम्प्रूवमेंट वगैरह, सो अभी आपके पास टाइम है, आप बताएं। यू हैव 5 मिनट्स फॉर दिस टू। फिर हम लोग अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे टेंसेस पढ़ना। मैम तकरीबन 7:30 बजे तो नमाज है मगरिब के, जी जी, इसलिए आप मुझे जो है भी ना पता है 7:30 बजे 7। नमाज है, मुझे भी नमाज पढ़नी है। हम 7:30 बजे तक क्लास माइंड अप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अच्छी बात है। सो लेट्स टॉक अबाउट डांसेस। अब मैं आपको एक शायद बात बताना भूल गई। जो मेरी थ्योरी होती है, मतलब मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, वो यही होता है कि मैं खुद कम बताती हूँ और आप लोगों से ज्यादा पूछूंगी। मतलब आप लोगों का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने देने, एंड इट्स बेटर टू यूज चैट। आप लोग वहां पे जो है वो टाइप करते जाएं और फिर हम लोग कंक्लूड करके अपना समाप्त करेंगे, ठीक है? सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टेंसेस। तो बताइए टेंसेस क्या होता है, कोई आइडिया? ओके, डिस्कस अबाउट टाइम। कौन सा काम कौन सा टाइम में हुआ? देन वी हैव ऑल अबाउट टाइमिंग। टेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है ना? जमाना, यस, वक्त। टेंस मीन्स टाइम, एग्जैक्टली। टेंस का मतलब ही यही होता है कि टाइम। So tense refers to the time frame of the action taking place and is described by using verb. अब tense में क्या होता है? tense जैसे आप लोगों ने बताया कि it's all about time ना। tense हमें बता रहा होता है टाइम के बारे में, और उस टाइम में जो एक्शन प्लेस हुआ होता है या एक्शन जो हम लोगों ने किया होता है उसके बारे में बात की जाती है। और उस एक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, एक्चुअली द यूज ऑफ वर्ब, हम लोग उसे जो है ना वो वर्ब के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें डांसेस की, सो टाइम की, तो हमारे पास 3 टाइम होते हैं। एक तो वो जो आज अभी चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट। एक वो जो गुजर चुका है, व्हिच इज पास्ट, एंड वन व्हिच इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर ना, जो हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है टाइम। so that is about future tense। अब 3 हमारे पास डांस होता है। अब तीनों डांसेस के अंदर हमारे पास यही होता है कि हर डांस में कुछ ऐसी चीज होती है, हर टेंस में हमारे पास 4 सब कैटेगरीज होती है। एक होता है हमारे पास सिंपल टेंस, देन वी हैव कंटीन्यूअस, देन वी हैव परफेक्ट, एंड देन वी हैव परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? तीनों में हमारे पास चारों कैटेगरीज होती हैं। अगर हम प्रेजेंट से स्टार्ट करें, तो प्रेजेंट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज करंटली हैपनिंग, ठीक है? प्रेजेंट टेंस में हम लोग करंटली डिस्कस कर रहे होते हैं वो चीजें जो अभी हो रही हैं इस वक्त में। हम लोग प्रेजेंट में हम लोग अपनी हैबिट्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी रूटीन्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं। एग्जांपल इसकी हो सकती है कि आई लिव इन यूएसए, एंड द अदर एग्जांपल कैन बी आई एम इन क्लास 10th,
ठीक है. Then if we talk about past tense, then past tense में हम लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं which is already happened, ऐसी चीज जो already हो चुकी है, which is done. For example, I lived in USA. मैं USA में रहती थी. I'm not living in USA or I live in USA. ना मैं अभी रह रही हूँ ना, लेकिन मैं रहती थी. So I was in class 9 last year. मैं class 9 में last year पढ़ती थी. Is talking about past. And if we talk about the future tense, then in future we discuss about what is going to happen later in the future. मतलब future में अब क्या होने वाला है ना. For example, I will live in USA. मैं maybe future में जो है वो USA में रहूँ. So I said that मैं USA में रहूँगी. I will be in class 11 next year. मैं next year जो है वो 11th grade में होगी. Or you guys will be in next year and will be studying in second semester. Yeah. So it's about tenses and overview. Already discussed about the subtypes of each tense. कि हमारे पास present में होता है indefinite, continuous, and perfect, and perfect continuous. Same as goes with past and same goes with future. ठीक है. तीनों जो है ना वो actions हम लोगों के different होते हैं. Verbs का सारा गेम होता है इसमें. Different verbs, different जो है वो types को जो है describe कर रहा होता है. So let's start with the present indefinite tense. Indefinite tenses में क्या होता है ना? So if we talk about present indefinite tense, and present indefinite tense can be defined as the action that is done in the present. एक ऐसा action जो present में done हुआ, however there is no definite time limit of it being accomplished. उसकी कोई time नहीं है कि वो कितने time में जो है वो accomplished किया गया है. What's your idea about present indefinite tense? आप लोगों का क्या idea? कहाँ use होता है? Uses बताइए मुझे. Present indefinite हम कहाँ use करते हैं? सब यहीं पर है ना? So tell me the uses of present indefinite tense. Present indefinite tense किस चीज के लिए यूज होता है? कहाँ यूज होता है? Yeah, universal truth, general truth, scientific truth, and other also truths. Okay. Done here, yes. To define daily routine, something which is happening currently, or I eat apple. Okay. So yeah, the uses of simple tenses, first ये for things that happen regularly, जैसे आप लोगों ने कहा routines. For example, I play cricket every Sunday. Shobha often dances. Gopi usually gets up at 6 o'clock and we watch TV in the evening. These are some our daily routines now, as you guys told. But the next use is about the things that are always true. जैसे आप लोगों ने बताया universal truths के बारे में भी हम लोग को भी describe करने के लिए present indefinite tense use करते हैं. For example, the sun rises in the east. Oil floats on water, bats fly at night. These are something which are universal truths. So to define them, we also use simple present tense. Then the third use is for things that stay the same for a long time. यानी ऐसी चीजें जो काफी टाइम तक सेम रही हों. For example, my uncle works in a bank. अब आपके uncle works in a bank. It's something that stays for a long time. वो कोई एक दिन के लिए वहाँ काम नहीं करने गए होंगे. They actually do work for a long time. They live in Mumbai. काफी टाइम से वो मुंबई में रह रहे होंगे and everybody likes them. So these are three uses of simple present tense.
ठीक है? Hope you guys got. Definite means yeah, indefinite means simple. Any question regarding this? Okay. Then what you guys have to do now is that underline the following simple present tense in the following underline the verbs in simple present tense in the following sentences. So what you guys have to do, you have to actually underline the verbs. Verbs आपको पता है ना, action words. अब आप लोगों ने उसे underline करना है. So just tell me or write in the chat box what is the verb in the first sentence. Tom plays tennis every tennis day. इसमें verb कौन सा है? Play. In the second sentence, the bank opens at 9 in the morning. Okay. Then we have the earth moves around the sun. Great. My mother is a scientist. The fourth sentence, my mother is a scientist. इसमें verb कौन सा है? Then Rahul speaks 3 languages. Okay. The train arrives at 6 every evening. My brother drives a truck. The sun rises in the east. Okay. अगर आप इन sentences को note करें ना, then we have Tom plays. Play के साथ हम लोगों ने क्या put किया है? As. Actual जो verb होता है वो होता है play. Then we have the bank opens, the earth moves, the mother is, Rahul speaks, arrives, and we have drives, and we have rises. Just tell me why we use as here. Exactly. Singular के साथ हमारे पास क्या लगता है? As और yes. अगर हमारे पास verb जो है, sorry, subject जो है वो singular है, so we are gonna put verb. So verb gonna carry as or yes. अगर हमारे पास plural verb subject है, so we are not gonna put as an yes. ठीक है? So with first person, for example, I and we. Second person to whom we talk, and you means the third, which is you, and the third person about whom we talk, he, she, they, and it. अब इसमें हमारे पास first person के साथ क्या use होगा? बेटा जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है हमारे पास आई वी यू एंड दे, उसके साथ हम लोग एस और ईएस के बगैर यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन इज always plural and second he, she, it, they are singular subject, so we put as and es. ठीक है? With I, we, you and they, the base form of the verb is used, यानी s और es put नहीं होता. With the he, she and it, the verb ends with as and es. ये रूल आप लोग याद रखिए. ठीक है? Singular के साथ singular, plural के साथ plural. So here is an exercise for you guys to complete. What you have to do is you have to put the right verbs in the following blanks. The first is my grandfather dash in Bangalore. Live or lives. जरा आप वर्ब की सही जो है ना वो चूज करें.
बेटा live नहीं होगा, it's lives. My grandfather. Grandfather is a singular person, singular subject. So we are gonna put as with the verb. So it's gonna be lives. The sun dash in the west. The children dash milk every morning. The children he dash the plants daily. They dash to church regularly. Rain dash from the clouds. Okay. The structure, let's talk about the structure of the sentence. अभी हम लोग कोई sentences लिख रहे होते हैं, so पहला होता है हमारे पास affirmative sentence, we have the negative, and then we have interrogative sentence. So like affirmative sentence में हमारे पास subject आता है, then we put verb, first form of verb, then we put object. ठीक है? Second, for example, she goes to school, as the verb, the subject is she, so we put es with the go. ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास subject आ गया to school. Then in negative sentence, what we do, we put do not or does not according to the subject, and with first form of the verb and object. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास subject वही he, she, it में से आ रहा है, so we put does, और अगर हमारे पास IU है तो हम do put करते हैं. लेकिन इसमें एक चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि क्योंकि हमने यहाँ पे does लगा he, she, it है, तो फिर हम verb बस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें भी चेंजेस एस और एस पुट नहीं करते जी. she does not go to school. अब she हमने यहाँ does लगा दिया, तो हमने go जो हमारा verb था उसके साथ एस और एस पुट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास does आ गया है जो ऑलरेडी टू के साथ हमने es पुट कर दिया. It shows the singularity of the subject. ठीक है? Then interrogative में भी हमारे पास सेम ही सीन है, does or do according to the subject, और first form of the verb, verb के साथ फिर यहाँ पे s और es नहीं लगेगा. Does she go to school? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन? That's good. So now there is another exercise, identify type of sentences. अब आपने यहाँ पे कुछ sentences लिखे हुए, इसके type identify करें, whether it is affirmative, negative or interrogative. The first one is I don't like to quarrel. Which type of sentence is affirmative, negative or interrogative? The second is she prefers coffee to tea. Second. The third is you always shop in that market. The fourth is the poet does not write romantic poems. Do you love to listen to realistic songs? Number 5. Do you love to listen to realistic songs? That's good. He goes to the library every day. Then here we goes. यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे again हमारे पास कुछ affirmative, negative और interrogative sentences हैं, और उन्हें जो है ना वो तीनों फॉर्म्स में लिखा गया. अब यहाँ पे जो मेन चीज आप लोगों को दिखानी है, it is this. Earth is bigger than Mercury. अगर आप लोगों के पास इस तरह के यानी यूनिवर्सल ट्रुथ्स आ जाते हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास is है, तो इस सूरत में आप लोग क्या करते हैं, do और does का यूज नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट नॉट पुट कर लेते हैं. ठीक है? अर्थ इज नॉट बिगर देन मर्करी, इज अर्थ बिगर देन मर्करी. ठीक है? इसी तरह यहाँ पे वो ही इज अ चेयर पर्सन, यहाँ पे हमारे पास जो वो है बी वर्ब है,
तो हम लोग उसके अंदर बी जब वर्ब आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इज डू और डज का यूज नहीं करते, डायरेक्ट नॉट पुट करते हैं, ठीक है। इतना ही इज माई एनिमी, ही इज नॉट माई एनिमी, इज ही माई एनिमी। चेयरपर्सन मीन्स अथॉरिटी है, उसके पास मालिक है वो। This is something, there is an exercise where you have to actually change the sentences into negative and interrogative. ये आप लोगों का homework है, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। Then make correction. अब आप इसमें correct करें sentence को. The first sentence is what he knows about you. इसे correct कैसे करेंगे? The second is I writes articles on different topics. I writes articles on different topics. The third is does you like to watch cricket? Fine. पहले में यही है, हम लोग जब affirmative हमारे पास कुछ interrogative में change कर रहे होते हैं, so as here is he, so we are gonna put does. What does he know about you? And the second is I writes, write नहीं होगा, write होगा, and then does की जगह do आएगा because there is you, which is the plural verb. Here is the quiz links. Go and actually solve these quiz. ये आप लोगों को जब पीपीटी शेयर की जाएगी तो आप लोग इसे ओपन कीजिएगा, लिंक्स पे क्लिक कीजिएगा और जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कीजिएगा। Then we have past simple tense. Past simple tense में हमारे पास क्या होता है? In past simple tense में हम लोग क्या करते हैं? The past indefinite tense, also known as the past simple tense, is used to talk about actions that occurred in the past at a specific time. अब इसमें क्या होता है, हम ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में हमारे पास एक्शंस जो हुए हों और उसमें जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे हुए हों. द वर्ड दैट टॉक्स अबाउट द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टाइम मेकर्स markers. Sorry, here are some common time markers, which is yesterday, last night, last week, last month, last year, last season, last decade, मतलब that day, that night. These are the words that actually shows कि हमारा जो काम है वो पास्ट में हुआ है, तो इन्हें हम पास्ट मार्कर्स कहते हैं. Yeah. So इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, so in past indefinite tense we have, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ did आएगा, ठीक है. यहाँ पॉजिटिव हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ हो तो उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट. अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो हम लोगों के पास सब्जेक्ट आता है, इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती. we put second form of the verb with object and plus past time marker if needed, ठीक है. नेगेटिव में हमारे पास डिड के साथ नॉट आ जाता है, कोई सिंगुलर प्लूरल का इशू नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली बस यू हैव टू पुट डिड. एंड इंट्रोगेटिव में भी हमारे पास डिड आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हमने डिड प्लस यूज किया है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं क्योंकि डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म ऑफ द डू. For example, she proposed me last night. Proposed, second form of proposed थी. One of my school friends had an accident last week. Had is the second form. And I woke up at 5 a.m. Woke up is the second form of wake up. So the uses about of past indefinite tenses, ये आप लोग बताएं uses. राइट सिद्धा, जब भी हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास वर्ब की, क्योंकि डिड पुट होता है वहां पे, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सॉरी सेकंड फॉर्म को वापस फर्स्ट फॉर्म में ले आता है. नाउ जस्ट टेल मी द यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. Where we use past simple tenses. We have 9 minutes left.
if you guys can do it in a hurry, so हम लोग ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे. चलो मैं डिस्कस करती हूँ. The first use of the past tense is to talk about actions happened at a particular time in the past. Exactly एक particular time में हुए हो past में. For example, she came to see me last night. वो last night जो है वो मुझे देखने के लिए आई. एक काम था जो उसने किया एक particular time पे जो कि past में था. ठीक है. We went shopping in the morning. We went for shopping. गए थे हम लोग लेकिन कल सॉरी सुबह. Did you talk to him yesterday? अब यहाँ पे क्वेश्चन है और वो पूछ ही रहा है कि did you talk, क्या तुमने बात की थी? और everybody supported me in that meeting. अब ये यहाँ पे जो है कोई they played football, ये भी सही है. So everybody supported me in that meeting. अब बात हो रही है उस मीटिंग की जो आपके पास में हेल्ड हुई थी और उसमें आपको सपोर्ट किया गया. He had used what second form of the support. ये फर्स्ट यूज समझ में आया. Should we move forward? Then the second use is a series of completed actions. यानी अब आपके पास बात आ जाती है उन actions की जो आप लोगों ने खत्म किए थे in a series. अब आगे हम लोग अभी अक्सर हम क्या करते हैं नरेटिव स्टोरीज लिख रहे होते हैं ना. तो नरेटिव स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट में होती हैं. नरेट कर रहे होते हैं स्टोरी में तो हम लोग डिफाइन पास्ट के कोई एक्शंस कर रहे होते हैं. तो उसके लिए भी हमारे पास क्या यूज होता है past indefinite. For example, last night he walked into my room, woke me up and took me somewhere with him. ये कुछ सिंपल उसने जो है ना वो कुछ एक्शंस बताए, सीरीज ऑफ एक्शंस बताए that happened last night. तो इनके लिए भी हम लोगों ने क्या यूज किया past indefinite tense यूज किया. Further the use is that after reaching here in the morning we checked into the hotel, got into our room, had breakfast and went for shopping. अब यहाँ पे भी एक सीरीज ऑफ एक्शंस है यानी वो नरेट कर रहा है अपना पास्ट अपने रूटीन को वो डिस्क्राइब कर रहा है जो उसने की थी. उसके लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. The third use is for the repeated actions or habits in the past. ऐसी हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस जो पास्ट में थे. फॉर एग्जांपल वी नेवर अटेंडेड हिज क्लास, वी ऑलवेज बंक इट. एक हमने कभी उसकी क्लास अटेंड नहीं की, हम हमेशा उसकी क्लास बंक करते थे. ये रिपीटेड एक्शन था क्योंकि हम जो है वो ऑल नेवर हमने कभी भी वो अटेंड नहीं की. ये रिपीट करते रहते थे हम लोग, हमेशा ही बंक करते थे. सो इट्स अ रिपीटेड एक्शन. सो जैन वर्कड एट द होटल आफ्टर स्कूल. जॉन जो है वो स्कूल के बाद जो है वो कहाँ पे काम करता था होटल में. दिस इज समथिंग दैट वाज हिज हैबिट इन द पास्ट. So I played cricket when I was in college. It was his routine. Then she played the guitar in the school. If you talk about the other uses, then to describe something or someone, किसी को describe करने के लिए किसी चीज को या किसी बंदे को हम past use करते हैं. For example, he was sad last night. बेटा just see wind up कर लें past indefinite. I guess this is the last slide. तो उसके बाद हम लोग आप लोग भी जो है नमाज का, मैं भी नमाज पढ़ूंगी. ठीक है. Just 5 minutes. 5 मिनट में आपकी नमाज नहीं निकलेगी. यहाँ पे तो अज़ान अभी तक कोई नहीं है. So to describe something or someone, किसी को describe करने के लिए, उसके emotions describe करने के लिए, so we usually use past indefinite. For example, he was sad last night. वो last night उदास था. And we can say they were very mean to me in the school. वो बहुत ज़्यादा mean थे स्कूल में. She was not happy. Or last night the weather was extremely pleasant and you were my friend last night. Wow. So these are something which is describing the state
and let's say it is about someone and something, so उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, past indefinite tense यूज करते हैं. If you talk about the structure, then इसमें structure में हम लोग usually was or were का use कर रहे होते हैं. Was with singular and plural we use were. The last use of the past indefinite tense is that to talk about the completed action and its duration in the past. Okay? If an action happened for a period of time in the past, use a past indefinite tense to talk about it. अगर किसी टाइम पीरियड के लिए एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करें. फॉर एग्जांपल, I lived in Japan for 5 years. मैं 5 साल तक जापान में रहा. Last night we danced for hours. हम लोगों ने last night डांस किया for hours and talked and I talked on the phone for an hour. हम लोगों ने last night जो है वो last night नहीं, इसमें जो सिंपल है कि हम लोगों ने फोन पे बात की for an hour. Then we have everyone waited for you at the stand for some hours. सबने तुम्हारे लिए वेट किया कुछ घंटों तक. And then we have Max studies Chinese for 4 years. अब यहाँ पे अगर आप इन sentences को देखें तो they are showing some actions that has been completed, but we have shown that duration ना, मतलब वो कितने टाइम तक रहे, हमने वो duration भी बताई है और वो actions जो है वो complete हो चुके हैं. So for that we use past indefinite tense. After that we have some exercise. I have actually some exercises for you. ये आप लोग खुद से कीजिएगा और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. I'm gonna share with you guys these PPTs right after the class. So आप लोग जाके फिर प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है. ओके, जमात हो जाएगी तो. Okay, let's end the class right here. See you on Tuesday. Tuesday को हमारी next class होगी. Timing might be this or might be at 7:45. I will tell you later. Allah Hafiz and have a good time.